Welcome student in third session from your textbook chapter number 2 Microorganisms, Friend and Foe. Today we will continue this chapter. In last session we studied about the microorganism, okay, live in all types of environment and their useful microorganism and harmful microorganisms, okay. So today we are going to study that food poisoning. What is the mean of food poisoning? Poison means you know that there is a means jar. So food poison. तो poisonous food भी हो जाता है. Okay, and how we will study in this topic. So food poisoning, okay, could be due to the consumption of food spoiled by some microorganism. Means that microorganism आपको पता है कि living things का जो भी मटेरियल होता है उस पे मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन होती है टू डिग्रेड दैट. ओके, सो दैट फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड. स्पॉइल्ड मीन्स खराब होना बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो दैट is called the food poisoning. And microorganisms that grow on our food, okay, microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substance. Toxic means जो means अपनी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं. ओके, मेक द फूड पॉइजनस. सो एंड मेक द फूड पॉइजनस, सो बिकॉज ऑफ दैट कॉजिंग सीरियस इलनेस मीन्स बहुत ज्यादा बीमार भी हो जाते हैं एंड इवन डेथ. ओके, डेथ तक हो जाती है फूड पॉइजनिंग से. सो वी हैव टू प्रिजर्व फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. मीन्स आपको फूड को प्रिजर्व करना चाहिए उसको खराब होने से. ओके, so how we have to do? So for that food preservation some methods are there. So methods of preserving food, first at home. Okay, so that dehydration. First method is what? Dehydration. From name only we can understand that dehydration means वहाँ पे पानी की कमी. Okay, so in that removing water from food means जो भी food आते हैं उसमें moistureness रहता है. Okay, so we have to remove that water from the food, remove that moisture from the food under the drying in sun. Means आप sun drying कर सकते हो, जैसे उसको धूप में फैला सकते हो. ठीक है, तो उसका अंदर का जो moisture रहता है, जो water रहता है, वो पूरा तरह से क्या हो जाता है, remove हो जाता है. Okay, next is what? Freezing. Freezing means what? Lowering the temperature means temperature को low करना. Okay, so that keep into fridge. Okay, means जैसे आपने अगर रूम टेम्परेचर पे, what is the suitable temperature for growing the microorganism at the room temperature? Means that microorganism ज़्यादा लो टेम्परेचर में भी नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई उनके लिए सुटेबल जो एटमॉस्फियर है, जो टेम्परेचर है, वो क्या है? रूम टेम्परेचर है. ओके, सो फॉर दैट फॉर स्लो डाउन देयर एक्टिविटी मीन्स उसकी जो एक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन करने के लिए आप उसको फ्रीजिंग कर सकते हैं. मीन्स आपको फूड आइटम आप फ्रीज में रख सकते हैं. क्लियर दिस वन? नाउ थर्ड मेथड इज व्हाट? इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ओके, आई टोल्ड यू बिफोर दैट मीन्स बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑल्सो वी कैन डिस्ट्रॉय दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्शन ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो इन दैट मेथड इज व्हाट? There is two methods, that pasteurization and there is a boiling. Okay, pasteurization method क्या होती है? Now about that is the pasteurization method. Pasteurization method is that pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. So in this method क्या होता है? क्या मतलब बॉयल किया जाता है मीन्स जो भी सब्सटेंस जो भी आपको करना है, तो जैसे लिक्विड है. ओके, तो मिल्क. ओके, फॉर टेक द एग्जांपल में मिल्क को मीन्स बॉईल किया जाता है. द हीट मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर. मीन्स उसको क्विकली उसको कूल करना पड़ता है. ओके, किसको? मिल्क को पहले आपने बॉईल किया और फिर उसको सडनली क्या करना पड़ता है? कूल करना पड़ता है. Okay, so by doing so it prevents the growth of microbes, because we know very well now that microorganism that will not survive in high temperature and in low temperature. So that's why there is a both method are there. First we have to heat the milk, okay, and after that chilled out.
that melt. So by doing so, it prevents the growth of microbes, and this process was discovered by the Louis Pasteur. So it is called the pasteurization method. Okay, so that pasteurization method is invented and discovered by the Louis Pasteur scientist. So that's why for giving him honor, so given the name that pasteurization. Clear this one? So now next, some that using preservative also, okay, to preserve the food, means food preservation के लिए preservative भी use किए जाते हैं. So what is that? Any substance that is added to food to keep it for long time. Means आपको जो substance को, जो main substance जिसको आपको preserve करना है, उसमें कुछ दूसरा एक substance को जो add किया जाता है, जो preserve करने के लिए, means उसको preserve करने के लिए use किया जाता है for keeping longer time. So that substance is called the preservative. Okay, so that salts and edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called the preservative. So we add salt or acid preservative to pickles. Means आपने देखा होगा अचार में सॉल्ट, नमक और एसिड मिलाया जाता है. मीन्स पिकल्स आपको पता है अचार को लॉन्गर टाइम के लिए आपको रखना पड़ता है प्रिजर्व करने के लिए. सो दैट वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. ओके, सो here is some example of that: salt, sugar, acid, oil, spices, lemon juice. So these are the common preservative and it naturally. Okay, now some chemical also. Okay, that there are a using of some chemical also, that is potassium metabisulfate, citric acid, sodium benzoate are the chemical preservative. Okay, these are also used. So these are also used in jams and space to check their spoilage. आपने देखा होगा जो जैम रहती है, ओके, उसके लिए तो इसमें ये केमिकल प्रिजर्वेटिव को यूज किया जाता है. क्लियर? So now revision what we know that today: food poisoning. Okay, microorganisms that grow on our food sometime so produce toxic substance, and these are harmful for our health. So make the food poisonous and sometimes causing serious illness, even death also. So we have to preserve food from being spoiled. Clear? For the preservation, some methods are there. Dehydration मीन्स आप जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्रीकल्चर फील्ड से डायरेक्ट गेहूं अगर आप उसको प्रिजर्व करके अगर उसको डायरेक्ट रख लोगे, सो इट विल व्हाट स्पॉइल, मतलब पूरे खराब हो जाएंगे. इसलिए उसको पहले धूप में मीन्स स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है, जिससे कि उसका जो मॉइस्चरनेस है वो सब पूरा क्या हो जाए, ड्राई हो जाए. क्लियर दिस वन? नाउ नेक्स्ट, फ्रीजिंग मीन्स वी हैव टू कीप फूड इन टू फ्रीज for their slow down the activity of microorganisms. आपने देखा होगा दूध को, ओके, दैट मिल्क को अगर आपको खराब होने से बचाना है तो उसमें 2 मेथड है. फर्स्ट यू टू कीप इनटू द फ्रिज, अदरवाइज बॉइल इट. ओके, और अनदर एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो? फॉर एग्जाम्पल दैट प्रिपेयरिंग कर्ड. ओके, कर्ड का अगर फॉर्मेशन करना है तो आपको जब मिल्क में थोड़ा सा कर्ड आप डालते हो सैंपल, तो आपको फ्रिज में रखना पड़ता है कि उसको बॉईल करना पड़ता है? दोनों ही नहीं करने पड़ते. ओके, वी शुड टू कीप एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज इन फ्रीज देयर इज ए लो टेम्परेचर, एंड अगर आप उसको डाल के बॉईल करोगे दैट इज ऑल्सो व्हाट, हाई टेम्परेचर. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसमें एक्शन नहीं होगी. ये आपने यूजफुलनेस में देखा था, यूजफुल फॉर दैट यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्लियर दिस वन? So there is an example. So that's why for that milk को अगर आपको खराब होने से बचाना है, so we should to keep into freeze, otherwise boil it. Clear this one? Now next, increasing temperature pasteurization method. In this method means first milk boil it, okay, and after that quickly cool down, and that process is called the pasteurization method. And second method is what? By heating. अगर आपको मिल्क को खराब होने से बचाना है तो we should to boil it. Clear? Now using preservative, that for the main substance, आपको अगर आपको उसको खराब होने से बचाना है तो उसमें आप उसको some preservative जो substance ऐड करते हैं उसको preservative बोलते हैं. We taken some example that pickle, jam, okay, and that जो
जो स्वीट जो पिकल्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट आंवला कैंडी, तो उसमें आपने देखा होगा शुगर का यूज किया जाता है. शुगर भी क्या है, इट इज अ प्रिजर्वेटिव. सो दीज आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव: सॉल्ट, शुगर, एसिड, ऑयल, स्पाइसेस, लेमन जूस. ओके, so now some are also there that chemical preservative: potassium metabisulfate, citric acid, sodium benzoate are the chemical preservative. Clear this one? Thank you.